Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to another edition of continued coverage from the Warriors Network about Cricket World Cup 2023. और आज हमारे पास फिर आतिर जिनसे आपकी मुलाकात पिछले हफ्ते हुई थी फर्स्ट प्रोग्राम में इन द वर्ल्ड कप सीरीज, वो आज हमारे साथ फिर से हैं. He's joining us from Mississauga in Canada. He is the Vice President of Marketing at VFairs. और he has a great enthusiasm for cricket और बहुत शौक रखते हैं क्रिकेट के बारे में. तो उनसे आज कुछ बातें करते हैं. आज बहुत ही यानी कि सनसनीखेज मैच जो कि एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान और श्रीलंका का होगा, वो हमारे सामने था. तो उसके बारे में कुछ इनकी राय जानते हैं और इनसे गपशप करते हैं. तो वेलकम आतिर. Assalamu alaikum. Thank you, Odil bhai, for having me again. तो अब यानी कि आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट आई थिंक 7 गेम्स हो चुकी हैं. जी 6, 7, 8 गेम्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट. हर टीम यानी कि एक राउंड तो खेल चुकी है. आज अब सेकंड राउंड में आ चुके हैं. दूसरे मैचेस हो रहे हैं. न्यूजीलैंड कल जीत गई, इंग्लैंड कन्विंसिंगली बांग्लादेश से जीती, और फिर एक बहुत ही अहम मैच पाकिस्तान के लिए आज था हैदराबाद में, देयर सेकंड मैच. और टारगेट जो था, आई मीन श्रीलंका वॉन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट ऑन दिस विकेट, और अच्छा टोटल उन्होंने स्कोर किया 345. एक पॉइंट पर लग रहा था कि ज्यादा होगा, शायद 400 भी हो जाए जब कुसाल मेंडिस खेल रहे थे. लेकिन देन पाकिस्तान केम बैक एंड टुक विकेट्स इन द सेकंड हाफ ऑफ दैट इनिंग्स और रिस्ट्रिक्ट किया उनको टू अबाउट 345 44 इन 20. तो कैसा लगा आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच इनिंग्स? क्या देख रहे थे आप? पहले तो बिल्कुल ही लग रहा था कि बस ये टिपिकल पाकिस्तान इम्प्लोडिंग वाला सिचुएशन होने वाला है कि बिल्कुल ही लेट जाएंगे. कुसाल मेंडिस ने, आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला था. मुझे तो उस टाइम से पता लग गया था कि ये पाकिस्तान को तंग करेगा, स्पेशली अगर शाहीन इज नॉट ऑन सॉन्ग. फर्स्ट हाफ वाज, फील्डिंग हमारी कोई इंटेंस नहीं थी. हसन एंड शाहीन वर ऑल ओवर द प्लेस. मेरे ख्याल से वो उनकी स्विंग कंट्रोल भी नहीं हो रही थी, विच फोर्स शाहीन टू कम राउंड द विकेट. लेकिन एक और जो मेरे ख्याल से कंसर्निंग बात है दोनों के बारे में, वो ये है कि दोनों की पेस बहुत कम हो चुकी है. यानी कि देयर बॉलिंग एट द अर्ली 80s. एंड हालांकि शाहीन मेरे ख्याल से एशिया कप में फिर भी ज्यादा तेज करा रहा था, बट नाउ इट वाज वेरी इजी टू नेविगेट. तो एंड ऑब्वियसली कुसाल मेंडिस ने गेम उठा दी, एंड देन समारा विक्रमा ने तो ऑब्वियसली स्टेबलाइज द होल थिंग. मेरे ख्याल से ये है कि लास्ट 10 ओवर्स के अंदर जब 61 रन सिर्फ कंसीड किए, आई थिंक पाकिस्तान ने मोमेंटम वापस गेन कर लिया था. क्योंकि आई फील 35 ओवर्स तक तो यही लग रहा था कि दिस इज अ 400 प्लस स्कोर, जिस तरह वो जा रहे थे, इवन मोर. लेकिन दे एक्चुअली पुल्ड बैक मैसिवली. हसन अली ने और शाहीन ने और हारिस रऊफ में जो एंड में बॉलिंग कराई है डेथ में, I think that was very crucial to restrict them under 350. It gave them a fighting chance. Although, having said that, 344 on any ground, any pitch, any bowling attack is still formidable. तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि अगर पाकिस्तान ने अर्ली विकेट्स खो दी तो बहुत बहुत मसला हो जाएगा. बट आई फील के latter half was still a bit positive. But I think overall, of course, credit to the Sri Lankan batsmen, specifically Mendes is in phenomenal form. लेकिन आई थिंक हमारा जो वीक पॉइंट रहा है, ऑब्वियसली पेसर्स की एक्यूरेसी, बट आल्सो शादाब खान वाज एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी टुडे. मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में नवाज ने चलो फिर भी कुछ कर दिया. आई फील इफ्तिखार इज स्टिल बेटर ऑप्शन देन इकोनॉमिकली ही वाज बेटर ऑफ देन द अदर टू स्पिनर्स. और जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्पेन पाकिस्तान इतना अच्छा इस टूर्नामेंट में नहीं कर रहा है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी एन इशू. तो हाफ टाइम पर 344 345 टू विन. हैदराबाद में रात को बॉल कहते हैं कि अच्छी नजर आती है, and people have said that it's, even though it was 344, you can play through the line and you can still score a lot of runs in the night time. और जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट किया अपनी इनिंग्स, they lost 2 wickets, which is like scoreboard pressure, Imam and Babar, but then Abdullah Shafiq and Rizwan got together. तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान की इनिंग्स पर? I think it's very important to also highlight that the previous highest score that Pakistan has ever chased is 260 something.
तो मतलब कि ऑन पेपर तो लग रहा था इम्पॉसिबल है, मतलब कि वी वर गोइंग इनटू द सेकंड इनिंग्स, और मेरे तो जहन में ये था कि यार ठीक है हार तो जाएंगे लेकिन लेट्स ट्राई टू रिड्यूस द मार्जिन, क्योंकि एनआरआर के ऊपर अगर जितनी भी हमने वो एक बेनिफिट लिया था नेदरलैंड से वो सारा वाइप आउट ना हो जाए। अब जब बिल्कुल। पहली दो विकेटें के लिए तो ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट आई वाज वर्किंग एंड मैंने कहा कि अब तो खत्म हो गया, बिकॉज अब बाबर एक दफा चले जाए तो कोई एक सिग्नल ही चले जाता है कि सब लोग जो है ना हम्म। वो अपने हम्म। शेल में चले जाते हैं। और टिपिकली 90s और 2000 के पाकिस्तान ऐसा है कि जब पहली अर्ली विकेट्स गिर जाती है ना तो फिर एक वो कंसोलिडेशन जो है ना वो हमेशा स्लो ही होती है, वो 20 ओवर तक ना बस वो बिल्कुल ही टुक टुक खेलना शुरू कर देते हैं। हम्म। But what was very very encouraging to see was कि अब्दुल्ला शफीक not only took मतलब कि full you know responsibility उन्होंने ली, वो उन्होंने पेस ऑफ स्कोरिंग को भी मेंटेन रखा ताकि रिजवान के ऊपर पूरा प्रेशर इतना ज्यादा ना आए। अगर आप देखेंगे वो हम्म। बाहर निकल के स्पिनर्स को ऑन द अप भी खेल रहे थे, ही हम्म। वाज प्लेइंग इनसाइड आउट शॉट्स एज वेल, चाहे वो या। डॉन के ऊपर था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसने दो तीन मारी हैं। हम्म। एंड आई फील कि वो पेस ऑफ स्कोरिंग मेड श्योर कि पाकिस्तान वाज ऑलवेज इन द गेम, इवन दो 20 ओवर्स के बाद भी वी वंट मतलब के रन रेट से हम फिर भी वर्ल्ड रन रेट से नीचे थे। उसके बाद कॉन्फिडेंस एक दफा आ गया, फिर देन यू नो रिजवान गॉट इन हिज ओन एंड देन अब्दुल्ला शफीक जस्ट अनलीश्ड, और फिर वो टिल 30-35 ओवर्स में जब 200 पार कर दिया उन्होंने, I think that just normalized everything. And it also allowed people like Saud Shakil and Iftikhar to play the natural game rather than get worried too much about anything. They Uh, had controlled the rate, और एक बार वो partnership I think 176 runs की थी they put together, and that was really good. mm, 200 taking up to latter part of 200, और फिर साउथ शकील आया और इफ्तिखार ने फिर yeah, रिजवान को साथ दिया, and the good thing was Rizwan stayed at the end, scored yeah, absolutely. 130 plus और उसको and क्रैम्प्स भी guided to इतने पड़ victory. रहे थे, हाँ। असल में मतलब कि उसमें भी डबल माइंडेड थे ना कि यार वी डोंट वांट टू लूज हिम आइदर, कि वो पूरा हाँ। टूर्नामेंट के लिए अनफिट हो जाए। एट द हम्म। सेम टाइम वो क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, बट ही स्टिल हैड टू स्टे टिल द एंड ऑफ द गेम, क्योंकि मुझे या। नहीं लगता कि वो फिर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है या। कि वो इम्प्लोड कर या। जाते हैं। शादाब ने आना था, नवाज ने आना था, दे पार्ट टाइम, लेकिन यू नेवर नो कि वो या। एक बार शुरू होते हैं तो फिर सारे गिर जाते हैं। या। बट तो आई फील कि यू नो इवन श्रीलंका का बस एक ये था कि देयर बोलिंग अटैक जस्ट हैड अ कपल ऑफ वीक लिंक्स, जिसकी वजह से आई फील इट वाज अ बिट इजियर फॉर अस एज वेल, तो वी हैव या स्पिन उनकी भी इतनी अच्छी नहीं थी, पथीराना बॉलिंग भी। स्पेसिफिकली जो वो 19-20 ईयर ओल्ड है उनका, हाँ ही उसमें वाज बॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस, जितने ऑल उसने ओवर द प्लेस, मतलब कि मोस्ट एक्स्ट्रास पे दिए हैं, ही मोस्ट एक्सपेंसिव बीट भी द वही है। कीपर 3 or 4 टाइम्स आई थिंक, तो वो तो फ्री 20 रन हमें काफी मिले या हैं बिकॉज ऑफ काफी दैट। मिले। तो I mean, that very interesting situation. So Pakistan has won 2 out of 2 matches, और जी आज का man of the match Rizwan था. So now comes the difficult match, the big one is on या Saturday. But Pakistan will move on now from Hyderabad, और move करेगा. Like I think अहमदाबाद this जा रहे time हैं। Ahmedabad जा रहे हैं. जी So that takes care of that. Sri Lanka has a very difficult now task because they have lost both their matches, and एब्सोल्युटली, they are facing I think Australia next, जो कि इतना आसान नहीं होगा उनके आसान लिए. नहीं होगा तो बिल्कुल। they are struggling. तो ये situation तो यहाँ है. I think very interestingly कि I was hearing Shoaib Malik today on the Pavilion show, और उन्होंने कहा कि if 2 of the 4 batters halfway point but get strike rate of within 100 or even जी score hundreds, Pakistan will win the game, which actually turned out to be true. एब्सोल्युटली ट्रू, Rizwan बिल्कुल। or Abdullah Shafiq, they didn't हाँ, have to go at million miles per hour, like in strike rate ठीक रहा, और they scored hundreds and they won. That was good. So शोएब मलिक ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि आप अगर कुसाल मेंडेस की देखते हैं, यू डोंट इवन हैव टू मैच दैट स्ट्राइक रेट, बस mhm. आपको 100 प्लस का स्ट्राइक रेट रखेंगे तो आराम से भी हो हाँ, सकता है, यू डोंट हैव आराम से टू हो जाएगा. Yeah. गो ऑल That आउट। was that was interesting. So coming to the final questions of the session, जो कि I kind of like it. सबसे पूछता हूँ. And in this round, I'm asking about your favorite wicket keeper for this tournament. In terms of batsman plus अब जो dismissals, both as a combination, आप किसको देखते हैं? Who would you pick?
तो देखें विकेट कीपर तो तीन ही नुमाया नजर आते हैं। एक क्विंटन डिकॉक है, उसने सेंचुरी मारी है। आपका केएल राहुल है, उसने 90 ऑड मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड देन ऑफ कोर्स रिजवान है। आई फील रिजवान इज प्रॉब्ली माई पिक राइट नाउ, क्योंकि दोनों इनिंग्स जो उसने खेली वो अंडर प्रेशर था। आई फील कि अगर नेदरलैंड्स के साथ वो 60 ऑड स्कोर ना करता तो पाकिस्तान काफी हम्म, मुश्किल हालात में था। और आज हम्म, की इनिंग्स तो वाज फिनोमिनल। हम्म, क्विंटन डिकॉक का तो चले वो इतना नहीं था, वो दे वर बैटिंग फर्स्ट, तो दे हैड टू पुट हम्म, रन्स ऑन द बोर्ड, वो और भी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, इतनी प्रेशर नहीं था। केएल राहुल का वाज एब्सोल्युटली हम्म, अमेजिंग एज वेल। बट इफ आई हम्म, वाज टू पिक ऑफ, ऑब्वियसली बायस भी है, बट आई थिंक रिजवान हैज बीन पिक ऑफ देम ऑल। एंड जितनी वो बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग करता है, उसकी स्टैमिना इज टेस्टेड टू द and लिमिट। and and you are picking him for the rest of the tournament. That's the thing आई फील I'm कि asking. हाँ, क्योंकि Okay, वो क्रिटिकल और क्रूशल बंदा है पाकिस्तान के लिए। okay, इफ पाकिस्तान आर गोइंग टू गो लॉन्ग, आई थिंक यू विल सी रिजवान प्लेइंग अ वेरी की पार्ट इन ऑल दोस okay. गेम्स। That's good. And now comes the difficult question: who would you pick for player of the tournament? उफ तोबा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इट्स अ बिट हार्ड टू से। देखिए अगर मैं बैटिंग के अंदर कहूँ ना तो आई स्टिल थिंक विराट इज गोइंग टू बी अ टॉप प्लेयर। ही इज अ बिग मैच प्लेयर। वर्ल्ड कप्स Yeah. के अंदर वो हमेशा परफॉर्म करता है रन चेसेस में, एंड स्पेशली एट होम ही इज ऑलरेडी इन गुड निक। Mhm. रिजवान वुड बी अ सेकंड कंटेंडर टू दैट। बॉलिंग के अंदर मुझे फीलिंग ऑलरेडी, अगर आप सेंटनर को देखें तो मैं तो वैसे भी अभी हक में हूँ कि स्पिनर्स आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर Mhm. व्हाटएवर टीम इज गोइंग। सैंटनर ने ऑलरेडी 7 विकेट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, प्लस वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, मतलब कि इट्स इज अ फुल ऑलराउंडर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे फीलिंग आती है कुलदीप यादव टाइप बंदा जो है ना, ही इज गोना आल्सो मेक अ लॉट ऑफ वेव्स, क्योंकि उसकी जरा चाइनामैन जो है ना वो जरा डिफिकल्ट है प्ले करने के लिए। ऑल्दो जडेजा गॉट 3 विकेट्स इन द फर्स्ट इंडिया Yeah. गेम, बट आई फील कि ये Who पूल ऑफ, who is your pick then? Finally. इफ आई वाज टू पिक वन पर्सन, मैं तो सेफ बेट तो विराट कोहली को दूंगा। Okay, that's Yeah, fine. that's Fair because enough. of it's the safest bet. Yeah, बाकी सारे जो है थोड़ी that's fine. बहुत मुश्किल है। Yeah, चले कोई बात नहीं. So thank you very much, Atir, for joining us and giving your comments. बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का. वक्त महदूद है, इंशाल्लाह फिर आपके साथ चैनल पर आपको लेंगे और इंशाल्लाह। मजीद comments और opinions शेयर करेंगे. Thank you very much. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।